Good morning, students. This session is for class 12th. Students, we are studying chapter 4. Last day we have completed examples of this chapter based on the magnetic field at the center of the current carrying loop. Okay, students. Today we are going to study Ampere's circuital law. Okay, so you can see on your screen the topic is Ampere's circuital law. Okay, so let's start this topic. You can see the most important point about Ampere's circuital law. There is an alternative and appealing way in which Biot-Savart law may be expressed. So you can understand the meaning of this statement. This is an alternative way in which Biot-Savart law may be expressed. Okay, so you can say this is the alternative way to express Biot-Savart law. Now you can see about the diagram, that is 4.14. Ampere's circuital law considers an open surface with boundary. Okay, so this is important point about this law. Ampere's circuital law considers an open surface with a boundary. So you can see this one is the diagram used to explain Ampere's circuital law. Now if we suppose take this current carrying wire, so you know about this current carrying wire there must be magnetic field in form of concentric circles. Okay, so you can draw the concentric circles. These represents the magnetic field lines. Okay, these are magnetic field lines of these current carrying wire. Okay, now on these lines you can take the small element dl, okay, in the direction of electric field. By using right hand rule you can find out the direction of this magnetic field. If you you can take this dl, that is the element of this circle that represents the that represents the concentric circles which are actually the magnetic field. So this dl, that is in the direction tangent at any point on the circle, is in the same direction of the magnetic field at that point. So you can see here the surface has current passing through it. We consider the boundary to be made up of number of small line elements. Okay, consider one such element of length dl. Now we take the value of tangential component of magnetic field, that is bt. Add this element and multiply it by the length element dl. We get b dl, the value of b dot dl. In this point this b and this dl are taken as vector, so this is b dot dl is equal to b dl, because b and dl are in same direction. So theta is equal to 0, and you know that b dot dl is equal to magnitude of b, then magnitude of dl, then cos theta. So theta is 0, it means cos theta is 1. So the value of b dot dl becomes, if you write here b dot dl in vector form, suppose these two are vectors, so you can write b then dl and then cos 0. So this one is equal to b dl. So this one is equal to b dl. Okay, so this b dot dl is equal to b dl. So you can see here b dot dl is equal to b dl. Okay, so let me repeat why this is actually b dot dl is equal to b dl. So
For this, let me draw the diagram again. Okay, so for this, let us consider a wire. Suppose this one is current carrying wire. Suppose I is current flowing through this wire, and this one is a circle. This circle represents the magnetic field, because magnetic field at different directions are different due to this current carrying wire, and the direction at any point is given by the right hand rule. So on this circular element, you can take any element dl in the direction of the tangent of the circle. So at that point, the direction of magnetic field and the direction dl are in same direction. So theta is equal to 0 at that point. If theta is 0, it will give you b dot dl is equal to b dl. Okay, so if you add all these points, you will get, so you can see here all such product are added together. So you can add all these product, and we consider the limit as length of element gets smaller and their number gets larger. Okay, so this circle can be imagined in very small elements. If you take the elements smaller, you will get large number of values. So it is mentioned here. Okay, the sum then tends to an integral. So the sum tends to an integral. You can see here b dot dl. Ampere's law states that this integral is equal to mu naught times the total current passing through the surface. So this is the statement of Ampere's circuital law. You can see here, this is the actual statement. Okay, so Ampere's law states that this integral is equal to mu naught times the total current passing through the surface. Okay, so the integral that is actually b dot dl, this is the closed integral of magnetic field over line dl, is equal to mu naught times total current passing through the surface. Okay, so this equation 4.17 represents the mathematical form of Ampere's circuital law, and the statement is given by this line, that is Ampere's law states that this integral is equal to mu naught times the total current passing through the surface. Okay, so the same statement in mathematical form given by equation number sorry, equation number 4.17. Here you can see where I is the total current through the surface, and the integral is taken over the closed loop coinciding with the boundary C of the surface. So you can see this line here, I is the total current through the surface, and the integral is taken over the closed loop coinciding with the boundary C. Okay, so this one is the surface. Now the relation above involves the sign convention given by right hand rule. So you can use the right hand rule. I am already discussed about this. Let the fingers of right hand be curled in since the boundary is transverse in the loop integral b dot dl. Then the direction of the thumb gives the sense in which the current I regarded as positive. Okay, for several applications, a much simplified version of equation 4.17a proves sufficient. We shall assume that in such a cases, it is possible to choose the loop called Amperian loop such that at each point of the loop either so there are following three cases. First one is B is tangential to the loop and non-zero constant. So you can take this one.
So may be tangential to the loop and non-zero constant. Second, B is normal to the loop. Third, B vanishes. Okay. So now let L be the length part of the loop for which B is tangential. Let IE be the current enclosed by the loop. Then equation 4.17 reduces to BL. Okay. So I hope you understand the meaning of this part actually. So if this is the closed integral, that is B dot dl since B and dl are in same direction, you can write B dl. Now if B is constant, you can say this B is constant. If so, you can write this one as B in closed integral dl now this dl can be capital L, so you can write this dl as B L, or you can write this dl as a 2 pi r, so you can write this as B into 2 pi into r. So you can write like this BL, or you can write B into 2 pi r, because this dl, after integration of this dl, it will give the total length of the loop. So you can write this equation B dl is equal to mu naught IE, because I is the current enclosed in that loop and mu naught is a constant, that is known as permeability of the free space. So you can see when there is a system with a symmetry, such as for a straight infinite current carrying wire in figure 1.45, sorry, in figure 4.15, the Ampere's law enables an easy evaluation. Okay, so the Ampere's law enables an easy evaluation of magnetic field, much the same way Gauss law help in determination of electric field. This exhibits in the example 4.8 below. We will discuss the boundary of the loop chosen a circle and the magnetic field is tangential to the circumference of the circle. So the law gives for the left hand side of equation 4.17b, that is B into 2 pi r. I am already discussed here. You can see here B into 2 pi r. If you choose the Amperian surface as a loop as a circle, so you can write at the place of B dot dl, you can write B dot 2 pi r at the place of closed integral B dot dl, because the total closed integral of dl will give you 2 pi r for a circular shape. Okay, so we find that the magnetic field at distance r outside the wire is tangential and given by, so you can see this will be given by B into 2 pi r, that is equal to mu naught I. So you can find out the value of B outside that circular wire, you can say cylindrical. So B is equal to mu naught times I upon 2 pi r. This is the value of magnetic field at a point. Suppose this is the wire, so this one is the distance r. So this is magnetic field at any point P due to this current carrying long wire. So the above result for infinite wire is interesting from several point of view. So let's see the points about this. It implies that the field at every point on the circle of radius r with the wire along the axis is same in magnitude. In other words, the magnetic field possesses what is called a cylindrical symmetry. The field that normally can depends on 3 coordinates depends only on one, that is r, where whenever there is symmetry the solution simplify. Okay, so this is the result similar to the magnetic field due to long infinite long wire
or you can say infinite long current carrying wire. Second point, the field direction at any point on this circle is tangential to it. So we have already discussed these points. Suppose this one is a wire and this is a circle. So the direction of magnetic field at this point is, suppose if current in upward direction, so this one is dl. Okay, so this magnetic field and the dl are in same direction. Okay, so in this case you will get b dot dl in same direction. So this is mentioned here. The field direction at any point on this circle is tangential to it. Thus the lines of constant magnitude of magnetic field form concentric circles. Notice now in figure 4.1c, the iron filings form concentric circles. Okay, so this one is the activity. If you use some iron filings, they form these type of concentric circles around the current carrying wire. Okay, so these lines called magnetic field lines form closed loops. Okay, so this one is very interesting characteristic of magnetic field lines form closed loop. This one is characteristic of magnetic field line. This is unlike the electrostatic field lines which originate from positive charges and ends at negative charge. So you can see this is the difference. You can see here this is the difference between magnetic field line and electric field line. You can say the magnetic field lines form closed loop, whereas electrostatic field lines originated from a positive charges and ends at negative charges. Okay, so this one is difference between magnetic field line and electric field line. The expression for the magnetic field of a straight wire provides a theoretical justification to Austin experiment. So this one is actually the theoretical justification of this experiment, or you can say the activity. Another interesting point to note that even though the wire is infinite, the field due to it at a non-zero distance is not infinite. So this is very interesting result. Since this wire is infinite length and it carries current I, but at distance r from this, the magnetic field is not infinite but it is finite. Okay, so it tends to blow up only when we come very close to the wire. The field is directly proportional to the current and inversely proportional to the distance from the infinitely long current carrying source. So it is very important. These you can see the field is directly proportional to the current. So in this case B is proportional to I and it is also proportional to 1 upon r. The relation is given above, that is B is equal to, we have already completed this relation, B is equal to mu naught times I upon 2 pi r. This is the actually value of the magnitude of the magnetic field. Okay, so you can see this B is directly proportional to the current and inversely proportional to the resistance. This one is actually the resistance from the wire and this becomes the radius of the circular amperian, or you can say the circular concentric circle which represents the magnetic field around the infinite long wire. Okay, so this becomes the radius of that circle, or this is the distance of the point P where we desire to find out the magnitude of magnetic field. Okay, now the fourth point. So there exists a simple rule to determine the direction of magnetic field due to a long wire, and this rule is called the right hand rule. So we will discuss about this. So this is called right hand rule and is grasp the wire in your right hand with your extended thumb pointing in the direction of the current
your fingers will curl around in the direction of the magnetic field. So let us understand about this. To understand this law, take a pen, okay, and grasp this pen at the place of wire in your right hand with your extended thumb. So ये पेन जो है ये आपके extended thumb को टच करनी चाहिए, ओके. यू कैन सी हियर द एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. और हम लोग मान लेंगे कि करंट की वही डायरेक्शन है. एक्चुअल में जब हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर में डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सपोज एक स्ट्रेट वायर है, उसको हम लोग अपने जो राइट हैंड है उसके पाम से पकड़ लेंगे, ग्रैस्प कर लेंगे. ग्रैस्प का मतलब आप समझते हैं मुट्ठी बांध लेंगे और उस मुट्ठी के अंदर ही वायर होगा. थंब को एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो हमारे जो कर्ल फिंगर्स होंगे वो सभी मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करेंगी, या आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रेजेंट करती हैं, ओके. सो दिस वन इज नोन एज राइट हैंड रूल, ओके. दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन of the magnetic field in these cases. So now Ampere's circuital law is not new in content from Biot-Savart law. Both related the magnetic field and the current. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि what are the similarities between Ampere's circuital law and Biot-Savart law. So you can say both relate the magnetic field and the current, and both express the same physical consequence of a स्टीडी इलेक्ट्रिकल करंट. ठीक है, तो इन दोनों में ही स्टीडी इलेक्ट्रिकल करंट का यूज करते हैं. एम्पियर्स लॉ इज टू बायो-सेवर्ट लॉ व्हाट गॉस लॉ टू कूलम्स लॉ, ओके. तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ के लिए एम्पियर्स लॉ वैसे ही यूजफुल है जैसे कि गॉस लॉ और कूलम्स लॉ रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे है जैसे कूलम्स लॉ और की हेल्प से और एम्पियर्स लॉ दोनों की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे. वैसे ही यहाँ पे एम्पियर्स लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से भी किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. बोथ एम्पियर्स एंड गॉस लॉ रिलेट a physical quantity on the periphery of boundary that are magnetic and electric field. So you know that this Ampere's law is related to the magnetic field, whereas the Gauss law is related to the electric field. To another physical quantity, namely the source in the interior, that is known as current or charge. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करता है करंट के साथ, जबकि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के साथ रिलेट करता है. वी ऑल्सो नोट दैट एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर स्टीडी करेंट्स वी डू नॉट फ्लक्चुएट विथ टाइम. तो यहाँ पे ये लिमिटेशन हो गई एम्पियर्स लॉ की, तो यहाँ पे लिमिटेशन देख सकते हैं आप. वी ऑल्सो नोट दैट एम्पियर सर्किटल law holds for steady currents we do not fluctuate with time, okay. The following examples will help us understand what is meant by the term enclosed current. तो अभी यहाँ पे enclosed current के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, उसके पहले यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे वो क्या क्या रहे. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में जानते हैं. तो एम्पियर सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मैथमेटिकली बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब यहाँ पे देखिए आई द इंक्लोज्ड करंट है, ठीक है, डी एल वेरी स्मॉल एलिमेंट है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड है. अब यहाँ पे इस बी डॉट डी एल को आप, क्योंकि इस बी डॉट डी एल को इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम केसेस में बन जाते हैं. ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर इसके बीच के जितना एंगल होगा कॉस के साथ उसका यूज़ करेंगे.
तो ये हो सकता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, और ये अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फिर उस केस में ये टोटल इंटीग्रल एल, या फिर सर्कल में 2πr, या फिर किसी और केस में आपको मिल सकता है डिफरेंट। बट यहाँ पे ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को ये रिलेट करता है। वह ठीक वैसे ही जैसे कि गॉस लॉ रिलेट करता है किसको, अगर गॉस लॉ की हम बात करें तो गॉस लॉ में आप देखेंगे गॉस लॉ है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, गॉस लॉ और ये एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है गॉस लॉ। तो यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को करंट के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे कूलम्स लॉ से भी आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच का रिलेशन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गॉस लॉ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइन एम्पियर्स एंड गॉस लॉ रिलेट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द पेरीफेरी और बाउंड्री। तो ये देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या करते हैं, पेरीफेरी और बाउंड्री, ओके, टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी नेमली द सोर्स इन द इंटीरियर करंट और चार्ज। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नेमली सोर्स का मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स क्या है, करंट है। तो आपको पता है ये करंट है सोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स क्या है, चार्ज है। तो ये चार्ज के साथ इनको रिलेट कर रहा है। दूसरा हमको जानना होगा व्हाट इज राइट हैंड रूल। स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल की हेल्प से ही हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो ये है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल देखिए, दिस रूल इज कॉल्ड राइट हैंड रूल एंड इज, अब इस रूल के बारे में यहाँ से दिखाया जा रहा है, ग्रैस्प द वायर इन योर राइट हैंड। ग्रैस्प मीन्स पकड़ना है एक वायर को अपने राइट हैंड में विथ योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कैसे, जैसे आप अपना राइट हैंड लीजिए और उसको मुट्ठी बांध लीजिए। ठीक है, थंब एकदम सीधा रखेंगे, थंब उन फिंगर को टच नहीं करना चाहिए, बट जितना ज़्यादा थंब को आप अपने फिंगर से दूर कर सकते हैं उतना दूर करेंगे। ठीक है, तो थंब को टच नहीं करना है, हमारे फिंगर्स के साथ जो फर्स्ट फिंगर है उसके साथ टच नहीं करना है, मुट्ठी नहीं बांध लेना है, चार फिंगर को एक साथ कर्ल बनाना है और जो थंब है उसको स्ट्रेट, जितना ज़्यादा स्ट्रेट हो सके। अब जो वायर है वो थंब को टच करते हुए ले जाना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेंगे कि जो थंब ऊपर की तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट है। तो अपने हाथ को हमें ऐसे ही अरेंज करना होगा डिफरेंट केसेस में। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारी कर्ल फिंगर है, जो रिमेनिंग जितनी भी फिंगर्स हैं जो कर्ल अराउंड है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है राइट हैंड रूल। इसी रूल का यूज़ करके आप जो है डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so student, I hope you understand the concept of Ampere's circuital law. This is very important for your board examination, and this is in next session we will study the applications of Ampere's circuital law. That means we will study about the magnetic field of
solenoid and toroid, and we will also discuss what is difference between solenoid and toroid and their uses. Okay, so I want to tell you one thing: try to revise the chapter daily wise and try to write the formulas and try to solve at least 10 questions on each topic. This will help you to understand the concept in more deep way, and you will be able to apply the formula and the concept in application level, means different and very difficult questions. Okay, so I hope you understand, and I hope you are doing your best at your home. Thank you for watching.